Voice Vision, project of Vasudev Bhubna Memorial Trust in association with SIMSA presents Entrepreneurial Idea Award 2019. Now, what you shared with me in the short amount of time at lunch was content, but I don't know anything about you. Okay? So I would like to start with hearing something about why do you care? Because if you don't care, I don't care. So I want to know that you're passionate, it has purpose, and it has need. What you led with was content. What I'd like you to consider is context. सर ने बोला कि उन्होंने मैम का आइडिया समझा कि और उसमें बहुत सारा कंटेंट था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो मैम से ये जानना पहले चाहेंगे कि उनको ये आइडिया लाना क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि अगर मैम इससे कोई प्रॉब्लम या कोई दुविधा का सल्यूशन दे रही हैं तब मैम एक्चुअली उस चीज़ के लिए केयर करती हैं और तभी उनका इन्वेस्टर जो इस केस में सर है तभी सर भी उस चीज़ के बारे में केयर करेंगे। खाली कंटेंट से इन्वेस्टर या सर को फर्क नहीं पड़ता। Also, what did you know about me when I sat down? Except that you sent those audios. Right, I sent the audios. How would you change your pitch using the power of a question? I want you to think about that, and I want you all to think about it for a moment. And I want you to think about where your pitch is, and I want you to think about it, and then we're going to go around the room, and you're going to start your pitch with the power of a question that creates interested, drives curiosity, and drives dialogue versus information coming at me, okay? So I will start with you, and I want you to think about how you will change your pitch with the power of a question. सर ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि सर खुद क्या है, कि सर का बैकग्राउंड क्या है, सर के इंटरेस्ट क्या है। और सर ये बोल रहे हैं कि जब हम पिच कर रहे हैं तो आप अपनी पिच को इस तरीके से चेंज कीजिए कि आप उसको एक सवाल से शुरू करते हैं। आप कितना स्ट्रांगली उस सवाल को पूछ सकते हैं और कितना इम्पैक्टफुल वो सवाल हो सकता है, उससे आपकी बाकी पिच डिसाइड होती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम या किसी चीज को अप्रोच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले पूछिए कि क्या जनता अवेयर है उस प्रॉब्लम के बारे में। ये एक सवाल हो सकता है। Okay, so आपको टाइम देंगे, हम मैम से ही स्टार्ट करेंगे। मैम को ये पिच एक सवाल से शुरू करनी है। Okay, I tell you a place where I don't live and you don't live, and you may not have been, but the place is, sorry, look at the guy on the camera. Where'd that guy go? The place is in South Kivu, Congo, and I'm speaking with child soldiers, and I'm interviewing a child soldier. In interviewing the child soldier, I asked him, had he killed anybody? He said, yes, sir, I have. I asked him how many? He said 19 people he had. I said, how do you know 19? He said it was his job. Okay? So that boy, child, soldier, both victim, child, was part of a larger system that created he as a victim. The war that he fights is fueled by something called coltan. In the industry, it is tantalite. So the tantalite is a key ingredient inside of all of our cell phones, all right? And so innovation itself created new victims that were not calculated in the path of social innovation. And so a true social innovator is responsible from the time of product creation, responsible to the time of product consumption. That's number one. I'll share number 2 and 3 with you in a second. There's more coming. सर अमर सर का सवाल ये था कि एनैक्टस जैसी संस्थाएं बहुत हैं दुनिया में जो हेल्प करना चाहती हैं दुनिया की, पर फिर भी लोग बहुत इस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते हैं और जो चैलेंज लोग हैं और इनएक्सेसिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो फिर भी है यहाँ पर, वो दुविधा फिर भी सॉल्व नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? तो सर ने इस चीज़ का ऐसे जवाब दिया कि जो अमर जैन का क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था और वो सर के दिल को काफ़ी छुआ है।
और उस बारे में सर ने एक आंसर दिया है जिसमें सर एक ऐसे देश में गए थे जहां हम में से कोई अभी तक नहीं गया और शायद जाएगा भी नहीं। वहां पे वो एक बच्चे से मिले, उसका इंटरव्यू लिया। वो बच्चा जो था वो एक सोल्जर था। सर ने उससे एक सीधा सा सवाल पूछा कि क्या तुमने आज तक किसी को मारा है? तो उसने बोला हाँ। सर ने बोला कितने लोगों को मारा है? तो उसने बोला 19। तो सर ने जब जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, तो सर को पता लगा कि एक पदार्थ है जो कि हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर डलता है, उसका नाम कोल्टन। कोल्टन इज द नेम ऑफ दैट। वो पदार्थ, वो जो चीज है उसका नाम कोल्टन है। उसके कारण एक ऐसा सिस्टम बना जिसका वो जो बच्चा है एक पार्ट है, इसलिए वो उस सिस्टम के अंदर आके हम लोगों को मार भी रहा है। तो सर ने ये जानना की कोशिश की कि जो सोशल इनोवेटर जो कि आप बनना चाहते हैं, हम उस चीज पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। इस उत्तर का जो आगे का है वो सर अब बताएं। So the other key part of your question that's really important is you're saying there's a gap between solution providers. There's still a bigger gap, really, honestly, in compromised populations. So on the screen behind me are my two pillars in my life that guide me. They're my two sons. My one son, Elijah, is 19 years old. He's very funny. He's a YouTuber. He is a good leader. He's engaging. He's handsome. He's a really good guy. He is my current 19-year-old. My current 21-year-old, his name is Justice. Justice has about 50 words to his repertoire. He is extremely autistic. He's apraxic, ataxic, and he's a big boy, and when he's in the room, it's my lesson of being very, very, very present. सर ने बोला कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर और जिनको सॉल्यूशन की जरूरत है उनमें एक गैप रहता है। सर ने अपने उदाहरण के लिए सर ने दो अपने बच्चों के बारे में बात की, एक जो कि 21 साल का है, एक 19 साल का है। 21 साल का जो सर का लड़का है उसका नाम जस्टिस है। Justice, yeah. जस्टिस उसका नाम है। वो काफी आर्टिस्टिक है और उन चीजों में इंटरेस्ट रखता है। Autistic, yeah. Autism, yeah. He's autistic. Yeah. और जो सर का दूसरा बेटा है वो एक ट्रू लीडर है। सर इसके बारे में अब आगे। Yeah. So what it reminds me of is if one of us can take care of two of us, then there's enough of us for all of us. Wow. If one of us can look after two of us, then there's enough of us for all of us. अगर हम में से हर एक इंसान दो और लोगों का ख्याल रख पाएगा तो ऐसे काफी लोग हो जाएंगे जो हम सबका ख्याल रख पाएंगे। But that doesn't solve your question. Because the rest of the world has not caught up. So here is a really powerful point on social innovation. Oftentimes, social innovation, products, services, start for the few, the privileged, those that can pay, those that can use. And then they adapt, like the iPhone finally catches up with an audio version of being able to read through articles and provide audio. They did not start with thinking about 100% of society. We can do so. A vending machine that serves hot and cold, that provides messaging and hot and cold touch and opportunity, can create a solution for 100% of humanity. So it's not so much the who, it's the how, the creation and the messaging, and thinking of how do we create products for 100% of humankind in the early stage of invention versus adaptation for the gap. Why do we do it? It's stupid. It's ludicrous. We must stop doing it immediately. Have some fun with that one. सर ने अमर जैन के सवाल पर कि ये गैप क्यों एग्जिस्ट करता है
सर ने बोला कि हमें इस बारे में सोचना कि ये गैप क्यों है, गैप नहीं होना चाहिए, ये स्टूपिडिटी। पर जितने भी जो प्रोडक्ट हैं जो भी हम यूज करते हैं वो स्टार्टिंग में सब लोगों के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं, पहले वो मेजॉरिटी लोगों के लिए बनाते हैं, फिर अडेप्ट किए जाते हैं। जैसे कि सर ने आईफोन का एग्जांपल दिया जो कि सुष्मिता मैम यूज कर रही हैं। पहले जो आईफोन था जब वो बना तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए वो एक ऑडियो वर्जन भी निकालेंगे जो कन्वर्ट करता रहे। तो पहले उन्होंने जब टारगेट किया सेगमेंट मार्केट को तब उन्होंने बस एक आईफोन बनाया, फिर उन्होंने देख के इसको इनोवेट और अडैप्टिव बनाया कि वो एक ऑडियो वर्जन भी निकाल पाए। Contact us at website www.voicevision.in, Facebook facebook.com/voicevision.in, Instagram voice.vision, Twitter @voicevision_in, YouTube Voice Vision, telephone 022 4040 0000, mobile 98205 66010. Thank you for watching the video and do not forget to like, share and subscribe.